Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about data handling. First of all, you should know about your data. First question from your research, your methodology, 100% arises from your data description. This variable is not possible. This figure is overinflated. This figure is understated, and so on. After this discussion, we will put data, we will place data on the econometric model. So the first step is data handling. We just look at our data, select one variable, plot that variable, just see what are highs, what are lows, is there any abnormal behavior in data, is there any abnormal behavior in data. So we have multiple techniques that we can use for looking at data. The first one is graphical analysis, the second one is summary statistics, the third one is component of a time series, the fourth one is indices and base dates, and the last one is data transformation. Firstly, I will briefly explain all of these techniques, then we will go for one by one. So we can use graphs for looking at data. The basic objective is to identify is there any abnormal behavior in data. Sometimes there are typed problem in punching of data. For example, you typed 22.5, but unfortunately 0.5 is missed, and so in this case so there are increased or decreased in figures of data. So the first step is you just look at your data. You just have to look at your data uh, before starting any analysis. The second step is summary statistics. We use the word of descriptive statistics. We know about mean, median, mode, standard deviation, variance, skewness, curtices, and so on. Descriptive statistics must be cleaned. Cleaned mean if there is any abnormal behavior in data, so you take a decision. For example, is if it is punching error, this specific company should be included or dropped. We have different method that we can use to clean that specific data. We have the other thing is component of a time series. In time series data, we have generally different attributes. There are long-term trend in data. Sometimes there are also some series. We can see seasonal patterns. There are some certain period of time in which in which figures are high. There are some certain period of times in which figures are low. For example, if you collected data from industrial from beverages industries, then in summer season the figures are high, in winter season the figures are low. So sometimes information in the form of indices are generally created on the basis of date, on the basis of time. For example, government give information about GDP. We can see the prices of 1991, 1996, 2010, and so on. So you have to align, synchronize, connect this information so that the effect of base will removed at the time of indices and base time. At the time of indices and base dates, you have to take care. And the last one is data transformation. There is another technique that you can transfer your data. Generally, data handling is just look at your data. Is it look appropriate? If there is any abnormality in data, so we can see that abnormality through graphs, through summary statistics, descriptive statistics, through component of a time series, seasonal, cyclical, through indices, through data transformation.
inshallah, in my next video, I will explain how we look data using these graphical analysis, summary statistics by using EView 9 software. So now समटाइम्स हम एक टॉपिक है रिसर्च, एक टॉपिक के बारे में लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं, तो एक रिसर्च पेपर में उसका फॉर एग्जांपल उसका वेरिएबल जीडीपी उसने सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरा रिसर्च पेपर पढ़ें उसने वेरिएबल लॉग ऑफ जीडीपी यूज़ किया हुआ है, थर्ड रिसर्च पेपर में वेरिएबल रियल जीडीपी यूज़ किया हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है? बेसिक जो हमारे पास प्राइम रीज़न है वो यही है कि एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी हम वेरिएबल पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्ट मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं एक प्रॉक्सी सेलेक्ट करूँगा, अडॉप्ट करूँगा, और सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, वन इज़ वेरिएबल एंड द अदर वन इज़ एक मैट्रिक, उस वेरिएबल को मेजर करने का मैट्रिक। सो इन वी हैव मल्टीपल मैट्रिक एग्जिस्ट करते हैं किसी एक की चीज़ के। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया जिसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है, तो मैं डिफरेंट मेरे पास फ्रिक्वेंसीज है, मैं वो यूज़ करके उस मल्टीकोलिनियरिटी के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया जीडीपी जिसकी वजह से स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है, तो मैं अब सिंपल वेरिएबल की जगह मेरे पास डिफरेंट प्रॉक्सीज हैं, मैं लॉग ऑफ जीडीपी वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। मैं जीडीपी को सिंपल को कन्वर्ट कर लूँगा ग्रोथ रेट जीडीपी में, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं वेरिएबल को ड्रॉप करने के बजाय उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लीनियर इक्वेशन, इफ़ यू वांट टू मेक a linear equation, then we used log of GDP variable. If I want to remove non-stationarity from our data, then we used growth rate GDP variable. एंड अगर मैं मल्टीकोलिनियरिटी को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं जीडीपी की जगह रियल जीडीपी वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। सो at the time of when we write econometric equation, तो हमारा फोकस कंस्ट्रक्ट फिनोमेना पे होता है, हमारा फोकस्ड प्रॉक्सी पे नहीं होता। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने कौन सी प्रॉक्सी यूज़ की हुई है इस फिनोमेना में। So now we will explain all of these technique one by one. So the first, just look at your data, just get the feel of your data, look at the number on a spreadsheet, note number of series, date, start dates, range of values, etc. सो ग्राफ्स हम हर ग्राफ नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लीनियर इक्वेशन के लिए हम मोस्टली जनरली लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम हम हमेशा यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए चेक करने के लिए अपने डेटा को। हिस्टोग्राम हमें बताता है गिव एन इंडिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, वेरिएबल किधर लाई कर रहा है, वेरिएबल का की लोकेशन क्या है, वेरिएबल की डेटा में स्प्रेड कितना है, डेटा की लोकेशन किधर है। स्कैटर प्लॉट हमें बताता है कि हमारा रिलेशनशिप लीनियर है, नॉन लीनियर है। लाइन ग्राफ फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ सीरीज। पाई चार्ट हम गुड फॉर परसेंटेज पोर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बार चार्ट गुड फॉर कंपैरिजन, फिगर्स की कंपैरिजन के लिए बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। सो histogram tell us four things. Number one is measure of central tendency, number two is measure of dispersion, number three is measure of location, and number four is measure of normality of data. So what is measure of central tendency? Measure of central tendency simply mean average. हमारे डेटा की एवरेज क्या है? We can calculate average from different method, mean, median, mode. Data of dispersion टेल अस हमारा डेटा में स्प्रेड कितना है, मैक्सिमम कितना डाटा है, मैक्सिमम कितना डाटा हमारे डाटा में मैक्सिमम कितनी वैल्यू आई है, मिनिमम कितनी वैल्यू आई है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कितनी आई है। दीज थ्री आर नॉर्मली यूज्ड फॉर
in research papers, and that measure of location, skewness and curtices are part of measure of location. Curtices हमें क्या बताता है, हमारा डाटा फ्लैट है, हमारा डाटा पीक्ड है. curtices हमेशा 3, अगर 3 से ज़्यादा है तो हमारा डाटा पीक्ड है, अगर 3 या 3 से कम है तो हमारा डाटा फ्लैट है. अब इस डायग्राम को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा डाटा पीक्ड है. और इधर देखें कर्टिसिस 4.93 है, मतलब 3 से ऊपर है. और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, पीक्ड डेटा के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लेप्टोकर्टिक. हमारा डाटा लेप्टोकर्टिक है. अगर 3 से कम है कर्टिसिस तो मीन हमारा डाटा फ्लैट है, हमारा डाटा प्लेटिकर्टिक है. और स्क्यूनेस हमें क्या बताता है, स्क्यूनेस हमें बताता है, स्क्यूनेस टेल अस डेटा, if data is more then if data is more on left side so it mean negatively skewed, if data is more than right side so it mean positively skewed. skewness हमेशा जीरो होती है. अगर 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 स्क्यूनेस हम फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है. अगर वो पॉजिटिव आई है, फॉर एग्जांपल 0.03 ये पॉजिटिव है, तो हमें पता चल गया है डेटा राइट टेल पे ज़्यादा है, लेफ्ट टेल. अगर ये नेगेटिव होती तो हम कहते हैं ये नेगेटिवली स्क्यूड है. जॉर्ज मेरा प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है. अगर जॉर्ज मेरा प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से ग्रेटर है, अगर ये सिग्निफिकेंट है, प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम है, इट मीन डेटा इज नॉट नॉर्मल. अगर 0.05 से कम है, इट मीन डेटा इज नॉट नॉर्मल. एंड सो नाउ द नेक्स्ट, स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट हमें क्या बताता है, स्कैटर प्लॉट टेल अस रिलेशनशिप, इज इट लीनियर रिलेशनशिप, इज इट नॉन लीनियर रिलेशनशिप. अब इस डायग्राम को देख के हमें अंदाजा हो जाता है इसमें कोई कर्व नहीं है, सिंपल लाइन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर है. लाइन ग्राफ इसको ये कोई भी दो सीरीज समझ लें. अब लाइन ग्राफ से ये दोनों सीरीज ये दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ को मूव कर रही हैं, पैरेलल मूव कर रही हैं लॉन्ग टर्म के साथ. इसका मतलब डेटा ग्रेजुअली राइज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ. मार्केट के अंदर एक नॉर्मल अप एंड डाउन नज़र आ रहा है. फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड फाइनेंस की मार्केट एक दूसरे के साथ चलती है. हमारा फोकस क्या है, सिर्फ देखना कि एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है डेटा में. तो हमें इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि एबनॉर्मेलिटी नहीं है. डेटा इन दोनों सीरीज में डेटा को मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है. इक्वेशन के लिए हम मोस्टली लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं. बार चार्ट फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ सीरीज. हम ब्लू में इस डायग्राम में ब्लू में राइज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ब्लू में ज़्यादा नज़र आ रहा है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जीडीपी और डेट ड्रा कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा पाकिस्तान का जीडीपी और डेट का रिलेशन कांस्टेंट है या डेट ज़्यादा स्पीड से राइज हो रहा है. बार चार्ट कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं. और एंड द लास्ट ग्राफ इस पाई चार्ट. गुड फॉर प्रोपोर्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल परसेंटेज शेयर, डिफरेंट चीज़ों का क्या है. फॉर एग्जांपल बजट का डायग्राम बना ली, कितने परसेंट प्रोविंसेस का हिस्सा, कितने परसेंट डेट सर्विसेज का हिस्सा, कितने परसेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर. ये जनरली क्रॉस सेक्शनल डेटा में यूज़ होता है पाई चार्ट. सो inshallah in our next video I will explain how we look our data by using these graph on EView 9 software. And thank you.